Hi guys, I hope you are doing well. So in the last video, we covered chapter 1 of class 9th maths, that was the use of coordinates. In this video, we'll be learning our chapter 2, that is Introduction to Linear Polynomials. So firstly, I would like to put some light on the things that you have learned in your class 8. Okay, let's begin with the video. So in class 8, you may have learned algebraic expressions. Basically, we have algebraic expressions are expressions that includes variables such as a, b, c, d, x, y, z, uh, any of the letters, right? So we have a, b, ax, or let's say we have 6a plus 7b. This is what we call as algebraic expression. So then what are linear polynomials? Okay. So we have a special types of of algebraic expressions that are called as linear polynomials. For example, here we are given that Raju went to a shop where there were sealed boxes of different colors on sale. The shop owner told him that the red boxes have 4 pens each and the blue boxes have 5 pencils each. Now, if Raju bought X red boxes and Y blue boxes, how can we quickly figure out the total quantity of pens and pencils? Okay, so here we can say that, let's say, the box of pens is denoted by X, right? And the box of pencils is denoted by Y, and we need to find the total amount of pens and pencils in total, right? So we are given that each red box has each red box has 4 pens, and each blue box has 5 pencils, right? So we can write that if Raju buys amount of X number of pens, X number of red boxes, then he will get 4x amount of pens, right? Because each box contains 4 pens. So we can write it as 4x, right? And now if Raju buys Y amount of pencil boxes, and as one box of pencil contains 5 pencils, so we can write it as 5y, right? So the total amount of pens and pencils uh, will come as 4x plus 5y. This is a linear polynomial. Basically, if we put some values of x and y, we'll get some result, and this is called as a linear polynomial. Now, further we are given that also if he got 3 extra pens free, how many pens and pencils did he get altogether? Now he's getting 3 extra pens, not any box or something like that. So we can just add here 3, and this will be our total. So therefore, we can see that you can also see over here the polynomial becomes 4x plus 5y plus 3. Right. So this is our polynomial. So basically, if we put some number instead of x and y, then we get the total amount of pencils plus pens. So for example, if he buys 2 boxes of pen, so put x is equal to 2, and if he buys only 1 box of pencil, then put y is equal to 1, and he got 3 extra pens. So this is our total count. So basically 4 twos are 8, 8 plus 5, 13, plus 3, 16. So in total he has 16 pencils and pens. Okay, so pens and pencils in total are 16 plus 6 are 16. Okay. Next up we have okay, so how do we represent a linear polynomial, and what are all the terms, what are coefficients, what are variables, what are constants? So for example here we had 4x plus 5y is plus 3. So here 4x, 5y and 3. These are called as terms. So basically we have 3 terms in this linear polynomial. Next we have coefficients. So the number that is in multiplication with the variable. Okay, well, let's first see what are variables. So x and y here are variables. So basically variables are something that can take up any value. So here
I can put x is equal to 1, 2, 3, 4, anything, and also y is equal to 1, 2, 3, 4, right? Next, we and the numbers that are associated with the variables, or else instead the numbers that are in multiplication with the variables, that whole thing here 4x and here 5y. So basically 4 and 5 are coefficients, whatever you call it. Okay, and here we also have 3. So 3 is constant. 3 will never change. 3 is constant. So at any given point we minimum answer would be 3, because if we minimum value that can be taken by x and y is always 0, because we cannot bias pen and pencil boxes in negative number. So if we put x and y is equal to 0, we'll still have 3 as answer, because 3 is a constant. So I hope you have understood this. So 4x, 5y and 3 are terms that are separated by multiplication, that are separated by addition or subtraction. X and y are variables. 4 and 5 here are coefficients of x and y respectively, and 3 is constant. I hope this is clear. So moving up next, we also know that algebraic expression having only one variable are called one variable polynomial, univariate polynomial, or simply polynomial. So basically, if I had 4x plus 3, right? If I had this expression 4x plus 3, so this polynomial, algebraic expression has only one variable, that is x, right? So when we have one variable, it is called as it is called as one variable polynomial, univariate polynomial, or simply a polynomial. You can see over here we have one variable polynomial, univariate polynomials, or only polynomials. Algebraic expressions involving one variable and its powers are called one variable polynomial, right? So this is how we represent a polynomial. Okay, now we also have that you will study in higher standard, but to just to know the concept, I'll tell you. Here you can see that the power of x is 1. What if the power of x is 2 sometimes, maybe 4x square plus 6, or 4x cube plus 8. Okay. So here now we can see that, wait, I'll take some other example. 4x square plus 3x plus 9, and here we'll take 6x cube plus 3x square plus 4x plus 1. So here you can see that the highest degree of x in this expression is 1. So the highest power of a variable in an algebraic expression or a polynomial is called as degree of the polynomial. So here you can see that the highest power of x is 1. So degree of this polynomial is 1. Sorry. So when degree of a polynomial is 1, it is said to be as a linear polynomial. I hope this is clear. Now moving on to the next example, we have here you can see that here the power of x is 1 and here the power of x is 2. So in an algebraic expression, the highest power for this expression is 2. So the degree of this expression is 2. So the expression that has a degree of 2 is called as quadratic polynomial. And next up, we have here in this example, the highest power of x is 3. So the degree of this polynomial is 3, and it is called as cubic polynomial. I hope this is clear. I'll just quickly summarize this part. The highest power of the variable in an algebraic expression is called as its degree. For a linear polynomial, the degree is 1. For quadratic polynomial, degree is 2. And for cubic polynomial, degree is 3, or vice versa. The polynomial with degree 3 is called as cubic polynomial. A polynomial with degree 2 is called as quadratic polynomial, quad and a polynomial with degree 1 is called as linear polynomial.
I hope this part is clear. Here you can see that. Also, one more part we have is one more part we have is what if there is no uh, term present with a variable. So let's say if I only have 8. So 8 here x ki power is 0 because we have nothing. Let's say it is 8x ki power 0. So anything raised to 0 is equal to 1. You know this. So here we can say that degree of this polynomial is 0. Therefore, it is called as constant polynomial. I hope this part is clear. So far we have learned what are linear polynomials, what are polynomials, what are linear polynomials, the factors associated with it, such as variables, terms, constant, coefficients, and then we saw what is degree, how degree 1 is called as why degree 1 is called as linear, degree 2 is called as quadratic, and degree 3 is called as cubic polynomial, and degree 0 is called as constant polynomial. Further moving, this is the exercise that you can solve on your own, or maybe this exercise would be solved by your teacher in your school. So next up, we have linear polynomials. We will study this through the examples that are given in the textbook. So now you can see that example 4 is given as the perimeter of a square of a side is side x is 4x, which is a linear polynomial in the variable x, right? So you can say that I have a, you know that if for a square, let's say its size is x, side is x. So you know that a square has equal sides. Like this side is also equal, this is also equal, this is also equal, this is also equal. So the what is perimeter? Perimeter is something that is outer area of the स्क्वायर शेप सो बेसिकली अगर मुझे स्क्वायर को फेंसिंग करना है तो मुझे इसका आउटर एरिया चाहिए ना तो बेसिकली ये एक जो चार डिब्बे है अभी ये एक्स है ये भी एक्स है ये भी एक्स है ये भी एक्स है तो पेरीमीटर क्या होगा मैं इनको सिर्फ ऐड कर दूंगा एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स तो ये मुझे 4 टाइम्स एक्स मिल गया राइट तो अभी मैं कौन सा भी स्क्वायर ले लूँ आई विल टेक एनी स्क्वायर विथ एनी साइड मान लो मैंने स्क्वायर का साइड लिया 1 सो मेरा एरिया द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वुड बी 4 मैंने 2 ले लिया तो उसका 8 हो जाएगा मैंने 3 ले लिया तो वो 12 हो जाएगा सो बेसिकली ये ऐसा दिस इज यूनिवर्सल बिकॉज पेरीमीटर तो बदलेगा नहीं साइड स्क्वायर स्क्वायर का दैट वुड बी ऑलवेज 4x एंड x is side of the square so whatever side I take, I'll get the perimeter as 4 into that side, right? So this was the example. This is a very basic example to give you an idea that how do we use the linear polynomials in real life. Next up, next example, we have a chess club charges a joining fee of rupees 200 plus rupees 50 for every match played. The following table shows the amount of a player will have to pay as the number of matches varies. Okay. So here we can say that the joining fee is 20. So basically joining fee is one time. बार बार तो player join करेगा नहीं. Joining fee is 20 हो गया. तो मैंने 20 लिख दिया. ठीक है 20 sorry 200 my bad 200. Joining fee is 200 right? तो joining fee is always constant. एक ही बार join करेगा इंसान 200 रुपीज उसका दे दिया. Okay. Plus 50 rupees for every match played. प्लस 50 रुपीज फॉर एवरी मैच प्लेड अभी मैं मान लो अभी तो मैं क्या करूंगा नंबर ऑफ मैचेस को आई विल से एज एक्स सो नंबर ऑफ मैचेस इज इक्वल टू एक्स सो बेसिकली आई विल राइट इट एज 50x सो अभी मैंने अगर एक मैच खेला तो मुझे 200 रुपया तो मैंने ज्वाइनिंग फी का दे दिया ठीक है वो तो वन टाइम था और मैं हर मैच के लिए मुझे 50 रुपया देना है तो मैं एक मैच के लिए 50 200 तो है ही मेरा 200 ऐड होगा ही मतलब 200 ऐड होगा बस 50 और एक मैच का मान लो फिर मैं एक एक्स को 1 रख दूंगा तो 50 200 प्लस 50 दैट इज 250 मान लो मैंने एक्स को 2 डाला 2 डालूंगा तो 200 प्लस 50 इंटू 2 दैट इज 200 प्लस 100 that is 300. Further, putting x is equal to 3, we get 350, 400, 450, so on and so forth.
जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ मैचेस खेलते जाऊंगा मुझे अमाउंट उतना ज्यादा पे करना पड़ेगा। 200 रुपया इज ज्वाइनिंग फी, दैट इज वन टाइम, सो इट इज कांस्टेंट। एंड हियर 50x इज अ टर्म दैट हैज 50 इज अ कोफिशिएंट एंड x इज अ वेरिएबल, क्योंकि x इज नंबर ऑफ मैचेस प्लेड। अभी वो दैट विल डिपेंड। सो इन जनरल इट कैन बी रिटन एज 200 प्लस 50m, वेयर m इज नंबर ऑफ मैचेस प्लेड। यहाँ पे मैंने x लिया था, इन्होंने m लिया है, दैट इज द सेम। So therefore 200 plus 50m is a linear polynomial in the variable m. अभी अमाउंट हर बार बढ़ते जाएगी 50 रुपए से, क्योंकि वो 50 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, राइट? ओके, कूल। सो भी यू कैन फाइंड अ पैटर्न दैट इट इंक्रीजेस विद द अमाउंट ऑफ 50। देखो, पहले 250 था, फिर 300 हुआ, 50 का डिफरेंस, देन इट हैड 350, 300 से 350 हुआ, दो का डिफरेंस, वापस 50 का डिफरेंस। यू कैन सी दैट द डिफरेंस इज 50 ऑलवेज। So it forms a pattern. So that is why such patterns are known as linear patterns. You can read it over here. You can refer the textbook also. So these patterns are called as linear patterns, in which the amount that we are finding out, the result we are finding out, increases linearly. Not एकदम ऐसा ऐसा तो नहीं हुआ ना कि पहले 250 था, उसके बाद सीधा 300, और उसके बाद सीधा 600 हो गया। नहीं, वो 50-50 से बढ़ते गया। व्हाट इज लीनियरली कि इक्वल इंटरवल्स में बढ़ते गया, 250 से 300, 300 से 350, 350 से 400, 50-50 रुपीज वो बढ़ते गया। सो दैट इज वाई लीनियर पॉलिनोमियल्स फॉर्म लीनियर पैटर्न्स। ओके, ठीक है, कूल। अभी अगर अभी मैंने हियर वी सॉ दैट कि चलो अपने मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था 4x प्लस 3y प्लस 3। ठीक है, अभी मेरा इधर वेरिएबल्स x भी है और वेरिएबल y भी है। व्हाट इफ देयर इज ओनली वन वेरिएबल टू अ कांस्टेंट? मतलब आई आई अगेन से कि अभी मेरे पास इधर भी वेरिएबल है, इधर भी वेरिएबल है। अभी मेरे पास इक्वल टू की बात कुछ है नहीं, 4x प्लस 3y प्लस 3 कुछ है नहीं है आगे। बट व्हाट इफ आई इक्वेट इट विद सम नंबर? मान लो इट इज मान लो इट इज 27। ठीक है, मान लो इट इज 27। सो नाउ दिस बिकम्स अ लीनियर इक्वेशन। Here you can see that whenever we equate a linear polynomial in one variable to a constant, we get a linear equation. मेरा अच्छा, ये वन वेरिएबल में था ना, इसको भी 3x कर लो, नो प्रॉब्लम। मैं तो निकाल ही दो ना, चलेगा। ठीक है, 4x, ओके। सो whenever we equate a linear polynomial in one variable with a constant, we get a linear equation. So ये जो मेरा बना है, that is a linear equation। ठीक है, आई कैन सॉल्व इट। मैं अगर 4x प्लस 3 है इज इक्वल टू 27 है, मैं क्या करूंगा? 3 को बाहर डालो, पहले इधर एडिशन में था, उधर जाके सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। 27 - 3, 4x इज इक्वल टू 24। अभी x के साथ इधर 4 मल्टीप्लीकेशन में, वहां जाके डिवीजन में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6। ये मेरा सीधा आंसर आ गया। ठीक है, this is just a linear equation. यहाँ पे भी we can see that the sum of two numbers is 64, one of the numbers is 10 more than the other। मान लो मैंने नंबर वन, पहला नंबर कंसिडर किया एज x। ठीक है, मैंने x मान लिया, ओके। ठीक है, मुझे बताया गया है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 64। तो सम है, ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर, उसका सम है 64। चलो, अभी दूसरा नंबर क्या है वो ढूंढना पड़ेगा। अभी मैं y ले सकता हूँ, बट मुझे क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है वन ऑफ द नंबर्स इज 10 मोर देन द अदर। मतलब क्या, वन ऑफ द नंबर, अगर मेरा एक नंबर x है तो दूसरा नंबर मेरा 10 ज्यादा है उससे, मतलब क्या, x+10 है वो नंबर मेरा, राइट? सो आई कैन राइट इट एज x+10। ठीक है, तो ये मैं क्या सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ, 2x+10 इज इक्वल टू 64। अभी चाहिए तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x ऑल्सो। इफ नॉट देन नो नीड। यहाँ पे भी देखो तो यू कैन सी दैट 2x+64 इज गिवन। सो अगर मुझे फाइंड करनी ही है वैल्यू, तो x क्या हो जाएगा, 64 - 10/2। तो दैट इक्वल्स टू 54/2, दैट इज 27। सो x मेरा 27 है, तो मेरा फर्स्ट नंबर मेरा, सो आई व्हाट आई गेट इज फर्स्ट नंबर मेरा 27 था, एंड सेकंड नंबर मेरा 37 था।
एडिशन कर लो 64 आंसर आता है। ठीक है, सो ऐसा सब है। Next up, we have function. So what is function? So basically, if I write something like that, something as in y is equal to 4x plus 3. चलो अभी मिल गया मुझे y 4x plus 3. So basically, मेरा जो ये पार्ट है ना, RHS में पार्ट है, ये मेरा फंक्शन हो गया। तो y इज फंक्शन ऑफ x ना, क्योंकि x को मैं जैसे जैसे वेरी करूंगा y वैसे वैसे वेरी करेगा। सो दैट इज दिस इज द फंक्शन ऑफ y। मतलब अगर मैंने x को 1 डाला, सो आई विल गेट y। देखो मैंने अगर x और y डाला, मैंने अगर x को 1 डाला तो मुझे y 7 मिला। x को मैंने 2 डाला तो मुझे y 11 मिला। अगर मैंने x को 3 डाला, 4 जा 12 प्लस 3, तो मुझे 50 y मुझे 15 मिला। ऐसा वेरी कर रहा है। तो अगर मेरा एक लीनियर पॉलिनोमियल की वजह से मेरा एक समथिंग अलग वेरिएबल वेरी कर रहा है, सो दैट इज अ फंक्शन ऑफ दैट फंक्शन, दैट वेरिएबल। सो बेसिकली 4x plus 3 is a function of y. Also we can write it as y is function of x. This will come in higher grade, so no need to worry as of now. ठीक है, I hope this is clear. Next up, we have exercise 2.2 that you can solve. Find the value of linear polynomial 5x minus 3 if x is 0, x is minus 1, x2. अभी बस ये x के जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर ले लो, हो गया, nothing much. Then next up we have exploring linear patterns. So I suggest you to read this part. You will definitely understand it. यहाँ कुछ नहीं है, बस तुमको स्टेजेस दिया गया है, हाउ लीनियरली दे इंक्रीज कर रहा है। पहले स्टेज 1 में एक टाइल था, फिर स्टेज 2 में 3 टाइल्स हुआ, फिर स्टेज 3 में 5 टाइल्स आया, देन स्टेज 4 में 7 टाइल्स आया। यू कैन सी 1 3 5 7। सो ये लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, तो ये पैटर्न बनाते जा रहा है, राइट, क्योंकि द डिफरेंस इज ऑफ 2 ओनली। सो दैट्स इट। देखो 1 था, 3 था, 5 था, 7 था, 9 था, 11 था, 13 था। So as I increase the number of stages, the number of square tiles also increases, and that follows a linear pattern because the difference between any consecutive number of square tiles is always 2. You can see over here. So that is why this both factors forms a relationship with each other. एज इन स्टेज अगर मेरा 1 है तो मेरा नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स भी 1 था, अगर स्टेज 2 था तो मेरा 3 था। तो कुछ तो है ना, मैं स्टेज जैसे जैसे वेरी कर रहा हूँ, मेरे नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स भी वेरी कर रहे हैं। सो दे हैव अ रिलेशनशिप। एक गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड है, अगर गर्लफ्रेंड कुछ कर रही है तो बॉयफ्रेंड को भी वो फर्क पड़ रहा है। सो दैट इज अ analogy that can be used. Do not take it seriously, but you can refer it over here कि अगर स्टेज 1 है, मेरा 1 है, तो उससे मेरा नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स पे फर्क पड़ रहा है। So that is why they share a relationship. So this relationship between the number of stage and the number of square tiles is known as a linear relationship. ठीक है? I hope this part is also clear with you. Um, Here we are given with the definition of linear pattern. A linear pattern is a sequence of numbers where the difference between two consecutive terms is constant. As I said earlier, यहाँ पे इनका difference was always 2. So they make a pattern, right? So that is why linear pattern is a sequence of numbers where the difference between the two consecutive numbers is always constant. ये patterns will study in sequence and series and progressions also. In maybe I don't know if you have it in 9th standard or not, but in 10th standard you definitely have it. So yeah, well then we need to know this much only about linear pattern. Next we have exercise 2.3 that you can solve on your own. Then we have linear growth and decay. So basically we can use linear expressions to help to model some situations or phenomena where there is a growth or decline. मान लो मैं एक ट्रिप पे जा रहा हूँ, ठीक है, मैं एक ट्रिप पे जाने वाला हूँ, 100 किलोमीटर मुझे जाना है, ठीक है, मुझे इतना इतना एक्स अमाउंट ऑफ पेट्रोल लगने वाला है 100 किलोमीटर के लिए। अभी मान लो मेरी ट्रिप एक्सटेंड होते गई 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, जैसे जैसे मेरी ट्रिप बढ़ रही है मेरा पेट्रोल का पैसा भी बढ़ रहा है। So that is why it has a linear growth, no? Because yeah, I have a linear polynomial कि अगर 100 किलोमीटर के लिए मुझे x अमाउंट ऑफ पेट्रोल लग रहा है, 200 के लिए मुझे 2x लगेगा, 300 के लिए 3x लगेगा। You know the difference is constant. That is why it has a linear growth.
तो ये बढ़ते जाएगा, या लीनियर डीके भी हो सकता है, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। मैं अगर मुझे 100 का लग रहा था पहले पेट्रोल, मैंने ट्रिप कट डाउन करी, मैंने 50 किलोमीटर ही किया, फिर मैंने 25 किलोमीटर का ही ट्रिप रखा। सो दैट इज ऑल्सो देर इज linear decay. There is also decay in the radioactive particles, okay, that you will get to know in 11th standard. तो वो तो linearly decay नहीं करता है, that is a exponential decay, but still, for example, you can consider it also. Here we are given an example that the cost of a journey is given by the linear equation C of D is equal to 100 plus 60D. This is how we denote function कि C of D, मतलब मैं जैसे जैसे D वेरी करूंगा मेरा C वेरी करते जाएगा. We are given that C of D is equal to 100 plus 60D, where C indicates total cost in rupees and D is the distance traveled in kilometer. Let us make a table of values for D varying from 0 to 10 kilometer and show how the cost increases for every time. Right, so एज आई सेड अर्लियर, मैं जैसे जैसे पेट्रोल किलोमीटर्स बढ़ाते जाऊंगा, मेरा डिस्टेंस बढ़ाते जाऊंगा, मेरा पेट्रोल का प्राइस बढ़ते जाएगा. यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि 100 रुपया तो मेरा कांस्टेंट है, मुझे 100 रुपया खर्च करना ही है, मैं 0 किलोमीटर भी ट्रैवल करूँ या 10 किलोमीटर भी ट्रैवल करूँ. सो 100 रुपीज आई नीड टू स्पेंड ओनली. बट वॉट इफ आई वॉन्ट टू ट्रैवल 10 किलोमीटर्स, देन हाउ मच डू आई नीड टू पे. सो उसके लिए ये उन्होंने टेबल बनाया है. मान लो मैंने 0 किलोमीटर्स पे था, मैंने डी में 0 डाला, मुझे 100 मिला, सी ऑफ डी इज इक्वल टू 0. फिर मैंने d इज इक्वल टू 1 डाला, सो व्हेन आई पुट d इज इक्वल टू 1, सो आई गेट 100 प्लस 160, सॉरी 100 plus 60, that equals to c of d is equal to 116. This is how it progresses linearly. You may notice that the difference is constant over here. यहाँ पे 60 रुपीज का डिफरेंस था, यहाँ पे भी 60 का 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 डिफरेंस था. सो यू कैन सी ओवर हियर. सो जैसे जैसे मैं मेरे किलोमीटर्स बढ़ाते जा रहा हूँ, वैसे वैसे मेरा प्राइस ऑफ ट्रैवलिंग भी बढ़ते जा रहा है. ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर ग्रोथ. यू कैन सी अ लीनियर ग्रोथ इन इट, नो. 100 से 400 जा रहा है, तो वो ग्रो ही होगा, वो डीके नहीं हुआ है. ऑल्सो वो जब जा रहा है तब इट हैज इक्वल अमाउंट, इक्वल डिफरेंस बिटवीन देम, राइट. सो दिस इज अ लीनियर ग्रोथ. But abhi we'll learn what is linear decay then. Let's take an example. The height of a water in a cylindrical tank is 3 meter at the start of summer. The height h meter at the end of t months is given by the linear function h of t is equal to 3 minus 0.5 t. ठीक है. तो मेरा 3 मीटर का तो हाइट पहले से था. h मेरा हाइट है, t मेरा टाइम है मंथ्स में. तो मेरा 3 मीटर का हाइट तो पहले ही था, समर का स्टार्टिंग है. ओके, आई एम सिटिंग ऑन 1st of March. मेरे पास 3 मीटर का, मतलब मेरे पास वाटर टैंक में 3 मीटर तक पानी भरा हुआ है. अभी जैसे जैसे समर बढ़ते जाएगा मेरा पानी कम होते जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन. सो वो मेरा एक लीनियरली फॉलो करेगा ऐसे, मतलब मेरा हाइट ऐसे वेरी कर देगा, 3 - 0.5 t. तो अभी मेरा जस्ट डे 1 है, अब तक 0 मंथ्स हुआ है. तो मैं टी को 0 डालूंगा तो ये पूरा वैल्यू 0, तो मेरा हाइट मिल गया 3 मीटर, तो बराबर स्टार्टिंग ऑफ इसमें मेरा 3 मीटर था. अभी आई मान लो मेरा समर चला है जुलाई तक, मार्च अप्रैल मई जून, मतलब जुलाई फर्स्ट तक खत्म हो गया. सो 4 मंथ्स है, मुझे अभी देखना है मेरा पानी कितना जाएगा. So I'll just calculate it. I'll put the values of t and I'll get the value of h. So मैंने 0 डाला तो मुझे 3 मीटर तो हाइट मिल गया, ठीक है. फिर मैंने t1 डाला तो मुझे हाइट मिला 2.5 मीटर्स. देन 2 डाला तो 2 मीटर्स, देन 3 डाला तो 1.5 मीटर्स, देन 4 डाला तो 1 मीटर. So you notice that again here we have a constant difference of 0.5, 0.5, 0.5. ठीक है. सो बेसिकली मेरा स्टार्ट ऑफ द समर दैट इज 0 मंथ्स. Let's say 0 months now, because we have put the value of t is equal to 0. So at the start of the month, we had 3 meters height of water. Then at the end of the summer season, after 4 months, we are left with only 1 meter of uh, height of water. ठीक है. तो मेरा कम हुआ पानी, मेरा 3 meters पे था. 3 meters is almost 9 point something feet, almost 10 feet we can call it as. 10 फीट से मेरा पानी हो गया सीधा 3.3 फीट तक. समझ रहे हैं, ऑलमोस्ट 7 फीट का पानी मेरा इवेपोरेट हो चुका है या फिर समर में यूटिलाइज हो गया. सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट कि दिस इज अ लीनियर डीके. दिस एग्जांपल रिप्रेजेंट्स अ लीनियर डीके. I hope this is clear. So next up we have exercise 2.4. You can solve it on your own. If you have any doubts, feel free to reach out to me in the comment section. I would love to clarify them. Next up we have linear relationships. Okay.
A linear relationship represents the relationship between two variables x and y and can be represented as y is equal to ax plus b. मैंने क्या बोला था? x है y है, ठीक है? x से याद आया, सॉरी, x है y है, x को मान लो मैंने x बदला तो मेरा y बदल रहा है। सो बेसिकली अगर x गर्लफ्रेंड है, y बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड ने कुछ बदला, बॉयफ्रेंड को भी बदलना पड़ा। गर्लफ्रेंड ने कुछ बदला, बॉयफ्रेंड को भी बदलना पड़ा। एक्स इज समथिंग, सो वाई इज ऑल्सो समथिंग। मतलब एक्स इज, एक्स को मैंने जो वैल्यू डाल रहा हूँ मैं एक्स में, उसके वजह से वाई बदल रहा है। सो दिस इज हाउ वी से दैट, दिस इज हाउ वी कैन say that ki x and y shares a relationship and that is a linear relationship. Here we can say that y is equal to ax plus b. ठीक है? So basically अगर मैं x की वैल्यू कुछ भी डालूं उससे y को फर्क पड़ेगा, कुछ भी डालूंगा तो भी। ठीक है? I hope this is clear. What is a linear relationship? Then we'll just visualize this linear relationship. Okay. So let's take an example. We have y is equal to 2x plus 1. We have learned in chapter 1 that how do we plot points on a graph on a in a coordinate geometry. It is x and y. ठीक है? अभी we'll take 4 points. ठीक है? x की कुछ values consider करते हैं and we'll plot y. If we consider, hmm, if we consider x is equal to 0, if x is 0, then we, एक second, what all points have, हाँ, if we consider x is equal to 0, we get y is equal to 1. ठीक है, okay, ये एक point हो गया. Then if we consider x is equal to 3, then we get y is equal to 7. ठीक है, तो ये अपने दो points है. We'll just plot it on the graph paper. Here they have plotted. So जब 0 और 1 को अपन ने यहाँ पे लिया y axis पे, right? I hope you remember the chapter 1. If not, you may visit my last video and learn the chapter 1 from it. It is a very short video. It would be done in some time. Okay, and next point we have plotted as 3 comma 7, that is over here. If we join these points and extend it further in both the sides, we get that it is a straight line. So we can see that a linear relationships makes a straight line always. मतलब अभी मैं यहाँ पे x की कुछ अलग भी वैल्यू लूँ, y is equal to मैंने 4x plus 2 भी लिया तो भी I'll get a straight line, मैंने 4x minus 2 लिया तो भी I'll get a straight line. हाँ, लाइन का स्लोप वगैरह सब बदल जाएगा. व्हाट इज स्लोप? बेसिकली अगर मैं एक स्लाइड पे खड़ा हूँ, लेट्स से दिस इज अ वॉल एंड दिस इज अ स्लाइड और लैडर. लैडर कुछ एंगल बना रहा है, राइट? ये ग्राउंड लेवल है मेरा, ये वॉल है एंड दिस इज अ लैडर. सो मेरा ग्राउंड से ये कुछ एंगल बना रहा है, सो दिस एंगल इज कॉल्ड एज स्लोप. सो बेसिकली आई वी कैन सी दैट अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे ये कुछ तो एंगल बना रहा है, यहाँ पे लेट्स से थीटा. Some angle is made by this line with the x-axis, so that is called a slope. And ये angle हर तरफ constant है, यहाँ पे भी constant है, यहाँ पे भी constant है. Every straight line has only one slope only. The हर point पे अलग-अलग slope नहीं आता है उसका. So this is the concept of slope, and we have visualized linear relationship because every linear equation have forms a straight line. यहाँ पे भी देखो, if we join all the points together, my bad. If we join all the points together, we get a straight line. ये अभी स्ट्रेट दिख नहीं रहा होगा तुमको, बट यू नो इट इज अ स्ट्रेट लाइन. इफ you can just buy a graph paper and you can plot points on it and you will get that कि okay ये equal है. We have slope also. I just explained you what is slope. In this standard you do not need to calculate the slope. That is just you should be aware about the term itself. That's it. So I guess we are done with this chapter. We'll just quickly summarize what we have learned so far. Okay, so we saw that what are linear polynomials, and it is a special type of algebraic expression that combines numbers, variables, and operation symbols. Then what are terms, what are coefficients? So basically, these are terms. Then we have coefficients. Then we also have constants, right? And we have variables with this x and y, a, b, c, d, anything. Then we saw that univariate polynomials. Basically, these are the polynomials having only one variable in x and y.
that has only one variable. Degree may vary, but a variable is only one. Here you can see that x is only the variable in this equation, y is only the variable in this equation. Then we know that the highest power of the variable in a polynomial is called as its degree. Then we saw that what is the degree of a linear polynomial is one, or a polynomial with degree one is called a linear polynomial. That is one and the same thing. Then we saw that linear growth and decay. What is linear growth and decay? Linear growth refers to a pattern in which a quantity increases by fixed amount over equal intervals. In contrast, linear decay describes a pattern in which a quantity decreases. मतलब growth में मेरा बढ़ते जा रहा है. मेरा cost of traveling was increasing as I increased my distance traveled. And in linear decay, we saw that my level of water was decreasing as I utilized it. Right. So that this can be understood. Then a linear pattern is a sequence of numbers where the difference between conjugated terms is constant. मतलब मेरा जो we saw that example of cricket match. So basically my fixed cost was 200 rupees and for every match I needed to pay 50 rupees extra. So मेरा that followed a pattern ना. पहले 250 था, then 300 था, then 350 था, then 400 था. So it had a common difference of 50, right? 50, 50, 50. So it followed a pattern. So this is a linear pattern. Then we saw a relationship, a linear relationship between two variables x and y is represented by a straight line. Y is equal to x plus b. So मेरा y और x में ये relation है. X को जैसे जैसे मैं करूंगा y वैसे वैसे बदलेगा. Y को जैसे बदलूंगा x वैसे बदलेगा. One and the same thing. Then we saw how do we represent it on graph. How do we visualize a linear relationship? Basically, it forms a straight line. Then again, also one more interesting thing we have is the growth is represented by a straight line with positive slope and linear decay is represented by a straight line with negative slope. Right? अगर मेरा ऐसा है ये मेरा बढ़ते जा रहा है तो ये मेरा घटते भी जा रहा है ना. So that is not a big deal. So I hope that this chapter is clear. All the concepts that I have taught is understood by you. Just for practice all the questions, read all the solved examples, practice all the exercises and solved examples as well, and then you'll be good to go. So see you guys in the next video. We'll do our third chapter of class 9 maths. Till then, bye bye. Take care. Thank you so much. वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।